Ma, I understand. But again, these are excuses. For example, Aditi, just for example, let us think that you got a job at US. What you will do? What you will do? Tell me. Then just like that. We don't know what will happen. Don't think like it is present in, Hyderabad, I cannot come. No, take an alternative. Do the things. Anyways, coming to advanced Java, as I said, 8 working days, 8 to 9 working days, starting from today. And Spring Boot, that depends upon the trainer. Spring Boot completely depends upon the trainer. Some trainers will take nearly 80 to 85 working days. Some trainers will take 100, 120 working days. That depends upon the trainer. Who is your trainer? You can, once the trainer started Spring Boot, he'll be letting you know how much time it is going to take. Okay. All right. Now, after that, sir, Sushant, you're asking, sir, when your Spring Boot will be started? I'm sorry to say no for it. My Spring Boot batch will not be started in recent times. It will take a lot of time. Please don't wait for my batch. Why? Because I do have some more things which I need to focus right now. Okay, Sushant, maybe I'll start not this year. Maybe next year I may start, or else at the time of Dasra I may start. Not right now. Please don't wait for it. Okay. Naveen, sir, tell me more about yourself. How was going on for a fresh? Uh, okay, Naveen, we'll do one thing. We'll try to have our QA session, question and answer session, last class. Is that okay? Last session, we'll have a question and answer session. Naveen, right? Yes. Why? Because why unnecessarily spoiling beautiful Monday? I don't want to spoil that. Clear? So let's try to go on with the concept and last class for advanced Java. Whatever the questions you are having, you can ask me. Cool. All right. So Saturday only I told you. Today we are going to discuss about two things. First one is servlet context. Next one is servlet config. I'm going to give you 30 seconds time. Think about servlet context and servlet config. What you know about these two interfaces? Servlet context and servlet config. What do you know? Okay. All right. There are the Shavan and Mohammed. Yeah, of course. Of course. Shruti, yes. So let me just try to show you this. Guys, these are the servlet objects up to now which we are already using. Servlet objects means we already know. Just a second. Just a second. Ah, okay. We already know about servlet program. Servlet program, ra? Class extends HTTP servlet. You need to respond. Class extends generic servlet. Yeah, we already know. We already know print writer class. Yes or no? Print writer in servlet only we covered. We already know servlet request. We already know servlet response. We know bean class. Do you remember that? Respond. And we know DAO layer, and of course, how important DAO layer is. We already know there are some 4 properties are there which we need to follow, like your class. Okay, that is about bean class. When you speak about bean class, there are 4 properties are there. Your class should be implementing serializable interface, and every variable should be private. You need to provide public setters and getters, and you need to write one
public default constructor. That bean class we will be using very frequently, that bean class in DAO. We know that. We already used that. Respond. Okay. And JCF also we already know. JCF. Yeah, yeah. What is JCF? Java Collection Framework. Collections, right? Collections. In core Java only we have completed. Actually, in our advanced Java, we used array list. Do you remember that? Okay. And of course, we already discussed about cookies. We already discussed about HTTP session. So still two things are pending. What are those? Servlet context and servlet config. Now, what do we know about servlet context? I told you servlet context object will be created whenever we are deploying our project into the server. Servlet context object will be getting created. That servlet context object will be having information related to the server I told you. And once if we set the attribute on that servlet context, wait, setting the attribute. Yes. On how many objects we will be able to set the attribute? Three objects. I'm impressed. First one is servlet request. Next one is servlet context. And finally, last one is HTTP session. Yes, we already set the attribute on servlet context and we get the attribute in JSP. Did you remember that? Okay, tell me one thing. In JSP, which object we use to get the attribute on servlet context? You did not understand my question. Listen, I'm having a servlet page, servlet page. In that servlet page, I used a request object, REQ, request dot get servlet context. Its return type is servlet context. Context dot set attribute message. I have given the message as Java is awesome. Now I want to get that message, get that attribute in the JSP. How I need to get that? Application. In see, application is one of the 9 implicit objects which were available in JSP. Did you remember that? So if we set the attribute on servlet context in servlet, we will be able to get that attribute in JSP by using application. Application dot get attribute. We already used that. We already know that. Now that is servlet context. Servlet config. Okay, okay, okay. When you come into servlet config, please tell me how many lifecycle methods are there? When you speak about servlet, how many lifecycle methods are there? Three. What are those? Init, service, destroy. Init method is a parameterized method or non-parameterized method? Parameterized method. How many parameters? One. That is servlet config. Servlet config will be unique for every servlet. It consists of information related to your servlet, that particular servlet. Do you remember that? I told you. Yes. We'll be discussing about that servlet context and servlet config today as of now. Now, tell me one thing. If we want to set the attribute on context object, context object. Are you understanding me? Which context? Servlet context object. How I'm going to set? Please tell me. Go ahead, go ahead. I just want to set the attribute on servlet context. How I am going to set? No, no, no. Sunita, no, 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 no. First, array. Guys, you need to remember. For example, just a second. Let me clear. Okay. Servlet context. Where we have used servlet context? In e-commerce? No. App 7, I guess we use it servlet context. Huh? Add employee, view employee servlet. No.
No, no. I think we used in e-commerce only. E-commerce, where in which where I used solid context. Anyone remembered? Wait, wait. I'll see in app 10. We'll see. Wait for it. Here. Fine. Final. Close all. Okay. Please observe here. Here, request dot get servlet context, and I'm able to get my servlet context object. What I told you servlet context. This one, servlet context. Okay. Now from this, yeah, of course, it's an interface. Now servlet context, I'm able to set the attribute. Where I set the attribute here. Did I set the attribute? Yes, I'm able to set the attribute. Basically, this is a servlet page. I'm able to set the attribute and I'm able to use that attribute. I'm able to get the attribute in the JSP or else in another servlet also, I'm able to get the attribute. Okay. Whenever I spoke about the setting the attributes, what I told you, please consider this as a key, this as a value. Did you remember that? Yes. Where we are writing this inside a servlet. Inside a servlet. Actually, we will be able to provide this key and value in the web.xml also. Web.xml, yes, that is also known as deployment descriptor. Are web.xml, you know web.xml, means here. Let me just try to src main web app webinf web.xml. Yes, we will be able to where come on. Here also we will be able to set the attributes like by using context param tag will be there. Whatever the attribute which we set here, just like setting the attribute in JSP, we will be able to get the attribute by using which object? Application object. Are you understanding me? Let's try to see that once. Please first write some notes. First, open your notes and I want you to please keep your citing as servlet context. Little bit fast. Just little bit. Go ahead. Servlet context. Please have this entire slide for me. Go ahead. You already know this. One more time. The only new thing is these tags. Tags are new. So please first write the data. After that, we'll speak. Go ahead.
और अब इसकी शुरुआत भी होगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले सुवेंदु अधिकारी बोले कि काउंटिंग ड्यूटी की जानकारी लीक हो रही है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के झंडे वाली कार को बिना जांच काउंटिंग सेंटर में एंट्री दी। वहीं तेज न्यूज लीकेज कर रहे थे कि आगे की रिपोर्ट सामने आ रही कि अब 89% लोग एआई फीचर्स देख करके खरीद रहे हैं स्मार्टफोन। मोबाइल फोन के मार्केट में नया ट्रेंड देखने को मिला। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स तलाश रहे हैं नए मोबाइल फोन बायर्स। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि चीन की शॉर्टकट से एआई सुपर पावर बनने की कोशिश है, तो अमेरिका ने दुनिया भर में चेतावनी जारी की और कहा कि चीनी कंपनियों से सावधान रहें। वैसे एआई पर चौंकाने वाली खबर तो ये देखिए आप, स्टैनफोर्ड एमआईटी के एक्सपर्ट ने भी चेतावनी जारी की और कहा कि गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी व क्लाउड एआई खतरनाक जानकारियां दे रहे हैं, जिनसे सुपर पद बनाना, फैलाना और पकड़े जाने से बचना तक सिखा रहे हैं ये एआई। तो भविष्य में कहीं ना कहीं इन जंगल खतरों एआई की वजह से साइबर स्कैम, साइबर घटनाएं और बढ़ सकती हैं और कहीं ना कहीं ये एआई बिजनेस के लिए भी एक बड़ा रिस्क बन रहे हैं। साइबर अटैक से $6.5 लाख का खतरा है। एआई बदल देगा पूरा खेल, ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है बढ़ते एआई की वजह से। देखिए और टेक न्यूज़ से एक और खबर है, वीवो X300 FE और X300 अल्ट्रा ये दोनों स्मार्टफोन 6 मई को लॉन्च होंगे। कंपनी इसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा देगी और कई एडवांस फीचर भी। वहीं जापान के वैज्ञानिकों की अनोखी तकनीक देखिए, अब हमारे दांत टूटने के बाद फिर से उग पाए। जापान के वैज्ञानिकों ने ये नया परीक्षण शुरू किया। अगर ये तकनीक सफल रही तो जल्द ही आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि चूहों और कुत्तों में तो दांत लगाने में सफलता मिल चुकी है वैज्ञानिकों को। अब जापानी वैज्ञानिकों ने इन दवा पर मानव परीक्षण भी शुरू कर दिया, जो कि टूटे हुए या गायब हुए दांतों को दोबारा उगा सके। यह USAG1 प्रोटीन को ब्लॉक कर टूथ बड्स सक्रिय करती है फिर से। तो 4 महीने की सफलता के बाद इस तकनीक को लोगों इन ह्यूमन ट्रायल में। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश के मेहमान राज्य हिंसा को 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन खबर यह है कि 4 बार समय सीमा बढ़ने के बाद भी जांच आयोग ने नहीं सौंपी रिपोर्ट। केंद्र सरकार का जांच आयोग अभी तक भी रिपोर्ट नहीं दे पाया। 4 बार समय सीमा बढ़ चुकी है। अब तक इस हिंसा में 270 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और राज्य में तनाव अब भी बना हुआ है। मणिपुर हिंसा में 3 साल में बस बदला तो सिर्फ मुख्यमंत्री बदला, हालात नहीं बदले। केंद्र सरकार अब 2029 तक पुनर्वास खत्म करने की तैयारी में है और इसकी शुरुआत अमरनाथ यात्रा के बाद होगी। मणिपुर में मेइतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़के हुए 3 साल हो चुके, लेकिन अभी भी यहाँ डर का माहौल है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, त्रेता युग का अंत तो कलयुग में फिर बन सकता है। श्रीलंका की धरती पर पहुंची आवाज, सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी है तो सपना पूरा होना चाहिए। दरअसल श्रीलंका में भारत के अद्भुत उपग्रह उपग्रह के हालिया बयान की वजह से ये सवाल फिर से सुर्खियों में आ गया। Make देखिए sure to श्रीलंका ने write the अपनी tags धरती से 30 correctly. किलोमीटर की भौगोलिक निकटता के बावजूद सीधे सड़क या रेल संपर्क न होने को लेकर एक बड़ी कमी बताई। उन्होंने एक स्थायी लैंड ब्रिज या टनल की जोरदार वकालत की है और इसके साथ ही दोनों देशों की गहरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रामायण से जुड़ी साझा विरासत का भी उन्होंने जिक्र किया। तो हो सकता है भविष्य में आपको श्रीलंका और भारत के बीच एक नया सीधा समुद्र सेतु या टनल देखने को मिल सकता है। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बनेगा नया शक्ति चक्र। यूपी के 31 जिलों के देवी मंदिरों को जोड़कर तैयार होगा नया पर्यटन सर्किट। उत्तर प्रदेश में अब धार्मिक पर्यटन को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। वहीं दोस्तों तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद पर भी खबर आ रही थी। बिना जांच किए इस्तेमाल हुआ 70 लाख किलो घी। नए सप्लायर्स को ब्लैकलिस्ट किया गया और नई खरीद रोकी गई, जबकि घी में मिलावट, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले सामने आ चुके हैं। उसके बावजूद आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति डेयरी फार्म के लड्डू प्रचार के लिए घी खरीद में गंभीर अनियमितताओं को संगठित करने की खबर का ये बड़ा Is it मंत्रि done? परिषदीय जांच समिति की तरफ से ये चौंकाने वाली I रिपोर्ट है। request you to जी हाँ, just लड्डू a से little सालाना bit 22 fast. करोड़ की आमदनी होती है। जरा सोचिए, मंदिर की मार्जिन स्थान कम, बल्कि यहाँ के लड्डू प्रचार और बिजनेस व्यापार वही खबर देखिए, देश के शंकराचार्य आदि गुप्तेश्वरानंद बोले कि हमें कोई मरवा दे, किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं। लड्डू को एसटी यात्रा से पहले उन्हें धमकियां दी थी। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं पीछे हटने वाला नहीं। और बॉलीवुड से खबर देखिए, फिल्म धुरंधर 2 बनी दूसरी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म। मूवी ने बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ा। अब कलेक्शन में सिर्फ डबल आ गया। और एक अनोखी खबर देखिए, अपराधी की छवि छोड़कर कृष्ण भक्त बनी एक्ट्रेस नेहा जय सिंघानिया। इन्होंने टाइम पेट्रोल में काम किया था, मेरे सपने में प्रेमानंद महाराज आए और उसके बाद हिस्सा बना ली। तभी उन्होंने अपना एक्टिंग का करियर छोड़कर अध्यात्म का मार्ग चुना और वो कृष्ण भक्ति में जुट गए। आज तो सब लोग मूवी देखेंगे आप क्या भैया को क्या बोलना है So these we'll write in our code right now. उन्होंने खेल Just wait मैंने for a few minutes. हेल We मारे already used this request.get solid context. We already used this. We already know its return type is solid context. Continuation, please. This is something new. आप नोट्स नहीं बनाते भैया तो बनाते थे Please. First write this. After that we'll speak.
After this, I want you to write servlet config also, so that both पेट की आवाज the क्यों? programs will be able to write at the same time. चश्मा लेना है। 2 more मुझे slides भी लेना after है, this. पर मैंने अभी रिसेंट प्रेजेंट नहीं ली। बाय वन गेट वन में लेती है। Yeah, we already know that. You know, to मैंने access लेंस कार्ड initialized कस्टमर नहीं parameter लिया values in अभी। servlet, बाय वन लो, हम we गेट need to वन use देते get हैं। init parameter method on solid context object. हाँ रे Okay. नेट इससे लेंस लेंस कार्ड कार्ड से सही मैच बोल रहे सब्सक्रिप्शन अभी तुरंत कैरम खेलते हैं। हैं ये तो टंगा हुआ क्या है? सूपी से एलिमिनेट होगा तुम्हारे में ऐप नहीं होगा, तो कैसे टेस्ट लिंक ऑफलाइन जाके। मतलब एक बार दी थी तो सस्पीशियस बता दिया था, तो उसके बाद से नहीं। इसको से बोला कि सेंटर में आके दो। उसके बाद से मैं खुद सेव के लिए 99 रुपया वेस्ट हो गया था मेरा। इतना छोटा बाल है, इससे बड़ा बाल तो मेरा है। बेबी हेयर है वो। बेबी हेयर नहीं है मर्दा। बहुत तरह के गेम होता है देखे लगी रही बड़ा बाल कॉल पैदा करो हुआ है। पूछो नहीं है जग्गू भैया तो देखिए, मैं तो बहुत कम है। इधर आई, इधर आई, आई ना कहीं। एगो हाँ वो भी जग्गू मोटा बंदा है। इसको काटने से भी रेबिस लगाना पड़ेगा। हाँ तो सही सुंदर सुंदर ढूंढना है जग्गू भैया की। वो ट्रिमर लेना पैसा दो देखती हूँ ना, थोड़ा आने दीजिए पैसे। बैंक का अभी तक अकाउंट में 1700 रुपये है। तुम 1700 रुपया के स्विगी से क्या मंगाई कब मंगाई? क्या पता इतना महंगा मंगाती है ना क्या पता कोची खाती है देखा तो मैं और मेरी रूममेट दोनों थे। क्या अभी मंगाई? तो पूछ रहे हैं क्या मंगाई थी नहीं बताऊंगी, उल्टी कर दी थी खा के, किसी बता दो। खोलिए तो इसको। जब भी मंगाओ ना तो क्लाउड किचन से मंगाओ क्लाउड किचन जानती है नहीं, हाँ जानती हूँ, समझ गई उसका खाना अच्छा रहेगा इतना पतला है रे, इतना बड़का पैंट ले लेती है अरे बड़ा लेवा गया ये है। कौन भेजा रे? क्रेडिट इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड हैं? दिखाइए कि पैसा आया क्या उसमें? मन कर रहा हाँ तो वो अपनी रूममेट का पेमेंट मैं की थी, तो रूममेट का दीदी पेमेंट वो वापस दी थी। पैसा आया वो दीदी तो बोलती है उसका। नहीं, रूममेट की दीदी अच्छा पेमेंट। अच्छा तुम उसको पैसा तुम्हारा पैसा मैंने तुमको उसके पैसा हिस्से का वो करी थी हाँ? पेमेंट, तो उसने वापस Okay. रिटर्न दी। Just tell me one thing, नहीं पहले दी थी, guys. उसने दे दी थी। Context dot get init parameter. वो पैसा नहीं This रखती है, वो line डायरेक्ट of दीदी को code भेजती है, तो we दीदी need भेजती to है। use in servlet. दीदी अगर फोन नहीं उठाई If I want to get the initialized parameter. याद ही नहीं। Wait, initializing parameter means अच्छा ये we'll तो be ये हम लोग trying to वहाँ set गए the थे कराची पे। parameters in web.xml. 3 दिन रही है These are the tags are there, na? कराची कराची Speak से now. चली गई। रावलपिंडी Context नहीं, param, और वहाँ भी चली context गई। param. Parameter name, here क्या generally like बोलते हो? key. क्या रखा है? Consider like this as a कौन सा key. मॉल था? रत्न And मॉल, this as a रत्नदीप मॉल भी गई। खेदा क्या value, करवाई key and value. This value in servlet, if I want to retrieve, we will be able to do that by using context dot get init parameter. कर कितना काट But what if I want to get that value in JSP? Absolutely correct, Talli. Application. In the place of context, what we need to use? Application. Application dot get init parameter. That's it. Clear? I'll show you. Okay. Online students, I hope. Shravan, is that सब clear? चीजें मम्मी बड़ा दिला दी इस बार। पापा भी डांट रहे थे। Shravan, I want you to please respond. 5 को Yeah, जीत yeah. ली थी We'll मैंने do that. दिवाली We'll try पे। to access that. दिवाली Wait for पे it.
Now please keep your night setting as servlet config, servlet config. Please फिर अफसोस हुआ कि note down सब the पायलट points जितने what I गए am going to say. सीधा Servlet config is an interface. ये क्या है मैसेज Servlet config is an interface कब दी थी टेस्ट? in एग्जाम के Java X एक dot दो दिन servlet बाद package, और उसके बाद नहीं एग्जाम के comma पहले या तो एग्जाम के तीनों बाद दिए ना, servlet तीनों कब कब config. दिए? Servlet config याद कैसे होगा is an मुझे interface in मत Java याद नहीं X dot servlet package, comma मैं automatically डेट भूल जाती created हूँ कि मेरा एग्जाम मेरा रिजल्ट कब आया था 15 को automatically created when एग्जाम 17 को स्टार्ट हुआ था a servlet खत्म is हुआ था 7 को when a servlet is गवर्नमेंट है, loaded for मुझे कुछ execution. गवर्नमेंट पहले नहीं दूँ पहले ही When a बोलने servlet थे नहीं is दूँ loaded for execution. नहीं भरी थी फॉर्म Next point. Servlet उसको क्या config बोला? is unique for कितना servlet खुलेगा बाबू, कुछ config नहीं is आएगा। unique for every servlet. खुल गया It मेरा मोबाइल is बस unique ठीक for कर दिया every servlet. Next point. It consists of, it means, what do you mean by इतना it? क्यों कर दिया मुझे Servlet config object. It consists of servlet name, comma, servlet अभी name, कर दिया comma, इसको देख के निकाल के configuration खोल जाओ information, है ना मैं बोल के अपना आईलैश लेती हूँ तो बोलते ले लो configuration information, and other दिवाली में हाँ and मैं other initialization parameters और यार वो मेरी छोटी and बहन पागल other कुछ भी क्लिक करती है initialization दीपा भाभी parameters में किसकी? दीपा पाटिल specific क्या to दीपा a भाभी? दीपा दीपा। दीपक गुप्ता specific ये to क्या खुल a गया? single servlet, दो अकाउंट था ना दो अकाउंट specific to a single servlet. ये वाला नंबर है एट जीरो Please have वन वन this सेवन वाला नया in वाला। your notes. हाँ, वो This पुराने बहुत dot get servlet config. Basically, get servlet config. This method is present inside. स्पुरुलिना Listen. क्या होता है? कहीं तो सुनी हूँ याद Did you remember नहीं। servlet hierarchy? अभी First कुछ दिन servlet. पहले After that, generic servlet. क्या? After that, HTTP servlet. नन्नू, अच्छा One more नन्नू time. 8 में गई ना? Servlet. ये क्या देख Is it रही a है? class or interface? अच्छा नंबर दिखा रही है। Interface. नंबर नहीं From दिखा रही है servlet, you are कुछ having a child. What is it? ऑप्शन नहीं आ रहा Generic पता नहीं servlet. क्या बोलते From generic servlet, you are having one more child. What is क्वेश्चन it? का ऑप्शन HTTP नहीं। servlet. Hierarchical inheritance. Sorry. Multi-level inheritance, right? Now, this method, get servlet config method, is पता है इसमें कुछ actually हुआ है ना, present हड्डी inside कर रहा था। generic servlet. Generic servlet. As generic servlet is a parent for HTTP servlet, we will be able to अरे access by लिखने using वाला है this वैसे। keyword. मैं That's the देखी reason. नहीं क्यों क्या Please बोल go दिया ahead. After that, write this last point also. Parameters specific to a servlet. Parameters specific to a servlet can be set using the init param tag, चश्मा ढूंढो ना, इंस्टॉल करो ना इसका। init param tag inside the servlet मेरे tag in the ऊपर web product आप ही server. लोग बता पाएंगे कौन सा मैं खुद कर पापा तुम के इसी साथ में देख लेना। पापा के साथ जाती हूँ Naveen, पापा कुछ here you बोलते can ही see नहीं this. हैं। पापा बोलता Parameters है जो लेना है नो हाँ specific वही to a servlet एक बार तो मैंने बोल दिया can be कि आपके साथ नहीं set जाऊंगी पापा के साथ जाऊंगी by बस आती ही using नहीं है। init param tag, init param tag. Actually, init param tag is a subtag for servlet. So, init param tag inside the servlet tag, फिर मम्मी के साथ जाती तो महंगे सस्ते करने inside the लगते servlet tag in the web product server. हैप्पी बर्थडे That's it. Okay.
Please have this in your notes right now. Write it क्या clearly. क्या कह रहा है क्या क्या नहीं नहीं मैं नोट तो कर फिर रही भेज हूँ। के रखी थी आप पहले बर्थडे का मैसेज आया उसके बाद हैप्पी बर्थडे टू सोनम आई ऑलवेज इतना बड़का भी लिखती है कम लिखते हो हैप्पी बर्थडे गुड मॉर्निंग एवरीवन when was the last time you ran so fast that your heart raced like a drum in advance? That's the power of the sports. स्पीच कर लो। They take us away from stress and put us in the moment. Sports are not just about competition or winning medal. They are about happiness, energy, and togetherness. Whatever cricket, football, badminton, or even simple game decision, we choose joy and freedom. Sports gives us moments where we laugh, cheers, and forget our worries. We pull together. ये बार बार बोलते हैं जो सामान जहाँ से उठाए वहीं रखना है। बातें नहीं समझ में आ रहा है। हाँ? उतना दूर आगे पड़ा ना। हाँ तो तू वहाँ से कौन लाया? तुमको सिखाओ उसको जो सामान जहाँ से उठाना वहीं रखना है। अरे कोई कोई कैरेक्टर बोलता ही नहीं। क्या रखने वाला था? तो बाल पका हुआ आराम से आएंगे। नहीं है एक भी बाल नहीं है। टाइम बहुत करती है। जाए ना एक भी बाल नहीं है। गर्दन आपसे मेरा दांत सब हमारा रख लो। आप पहले मेरा रख ले जो बोलिए बोलिए। सब आपके पास बहुत स्टिकर कल कैसी कष्ट व्हाट्सएप स्टिकर हाँ बहुत है नहीं दिखाने वाला दिखाइए। एक भी दिखाने वाला नहीं सब मेरा पहले आपने मेरा चोरी किया था उसके बाद बस आपका चोरी। Is it done? Please, 1 minute. सीरा कौन सा मंगाओ ड्रेस में का? Aditi, get servlet info. Get servlet config method. I repeat, get servlet config method is present inside generic servlet. मेरी दोस्त Okay, generic servlet class, या फिर not पहला in बताओ। HTTP servlet. Okay, but as generic servlet is the parent for एक्चुअली मेरे पास HTTP servlet, we will be able to अरे इसका access काम नहीं है तब generic देखो servlet मेरा class मेरा भी आया methods है। in HTTP servlet class by using both super keyword and this keyword. In the place of super, I'm just using this keyword. That's it. For Java. Yeah. For Java. All right. Now, guys, please continue. क्या टाइप करूँ? Please continue. After this, we'll be writing with our code. Please. In order to access the initialize parameter values in the servlet, we need to use get init parameter method, हाँ ये get सब init parameter तो method फिर माई on डेटा का servlet मेरा config कौन सा object. माई Up to here. Just please write from here to here. Enough. कौन सा अवार्ड मिलेगा अवार्ड From here to मेंटल here. मेंटल Enough. स्टेट क्यों होटल से एक अवार्ड लेने आऊँ। ये लेके आइए। हाँ कल फिर ये तीनों को नहीं थे पीछे। वो रोशनी भी करते हैं।
जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS गिफ्ट टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी छोटी-छोटी जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। महाराष्ट्र में कक्षा 12वीं HSC का रिजल्ट जारी कर दिया। साल का परिणाम केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छात्रों के प्रदर्शन और कई नई रिकॉर्ड के कारण चर्चा में बना हुआ है। बड़ी तुम खाती थी बच्चे नई जानकारी में कई अहम और सही दिलचस्प बातें कर देखती कितना मोटा है पहले कुल पास प्रतिशत की बात करें, इस वर्ष लगभग 90% के करीब परिणाम दर्ज किया गया। राज्य के सभी रीजनल बोर्ड जैसे पुणे, मुंबई, नागपुर, बच्चा हुआ खमोन खुश हो ये भी ना खा ली परीक्षा में शामिल हुए, वो भी देती थी पता है। 88,843 छात्र सफल हुए। बड़ी उल्टी की तुमने राज्य का कुल पास प्रतिशत लेके जा रहे हैं उल्टी कर दिया दूध पिला उल्टी कर दी एक मजबूत परिणाम माना जा रहा है। इस बार भी लड़कियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। लड़कियों का 5% 93.15% रहा, जबकि लड़कों का 5% 86.80% पापा दर्ज को किया लगने गया। जिसमें यानी लड़कियों ने लड़कों की 1 minute तो पापा के नंबर से बनना ही चाहे नहीं बेहतर प्रदर्शन किया। एक बार फिर ये साबित after completing. Feel free to open your laptop. का प्रदर्शन लगातार मजबूत हो रहा है। डिवीजनल प्रदर्शन पर नजर डालें तो होकर डिवीजन ने तो मैंने वॉच निकाली अपना कायम तो रखते वो हुए ड्रेस सबसे के साथ बेहतर क्या परिणाम पहनूंगी हासिल किया है। यहाँ का 5% 93.14% रहा है। पूरे राज्य में सबसे अधिक दूसरी ओर मामा जी के 4 बजे की हो गया प्रदर्शन इस बार सबसे कम रहा, जहाँ 5% 84.14% दर्ज किया गया। यह दर क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षा के प्रदर्शन को दर्शाता है। दिव्यांग छात्रों के प्रदर्शन ने भी इस बार सभी का ध्यान आकर्षित किया। परीक्षा में शामिल 8,677 दिव्यांग छात्रों में 7,579 छात्र सफल हुए। उनका कुल 5% 90.58% रहा। राज्य के औसत 5% से भी अधिक है। OTOP छात्रों को विशेष कंसेशनल मार्क्स की प्रदान की गई, जिससे उनका परिणाम और बेहतर हो सका। इसके अलावा इस साल की परीक्षा में शामिल 153 विषयों में से 26 विषय ऐसे रहे जिनमें 100% परिणाम Okay. दर्ज किया गया। I hope it's done for everyone. Open your laptops, please. छात्रों की मेहनत के साथ साथ शिक्षकों की तैयारी और मार्गदर्शन को भी दर्शाता है। मिलाकर इस साल का मंगला बबल पार्टी देंगे 90% क्लास का Okay. So अरे previously we're done with the app 10. तो क्या मांगेगा आईफोन मांगेगा App 11 is done. App 11 is मामा completed. जी भी बोल था What is the मामा number? बोल रहे थे गिफ्ट मांगना चाहिए आपको मामा जी से No, what is मैं the मन number में क्या application? बोलूं मामा जी अभी तक मेरा फैमिली का Okay. कटोरी नहीं In ब्रेक करके दांत my आया था जब गिफ्ट Eclipse app 11, कि वो after मेरे that को मिला था we मुझे नहीं done मिला with the e-commerce website. एक कपोड़े से तो So बोल स्क्रीन let's को go रखा with गया वो app लेके चले 12. I want to create an application, completely a new application, app 12. Feel if you are already having app 12, go with app 13. दादे रखो I want you रखा to हुआ लेके code चली along जाएगी with me. जी Please code along आगे with ऑर्डर me. काम आएगा अरे New वही है अच्छा वापस dynamic web project, मांगो से app बस मांग हो जाता 12, dynamic 4.0. Give a click on next. Next, make sure to select generate web.xml, डर लगता finish. है उसको गिरा गिरा है मुंह Okay, गिरा this is मुंह गिरा app मेरा 12. गिरा Now here, let me just try to get like खा go लिया like नहीं गिरा छोटी index.html, साथ go साथ to new, छोटी गिरा select साथ HTML, साथ छोटी index, index.html, give a click on next and finish. That's साथ it. साथ Now just want to write CNTS center tag. After that, H1, और लगता है okay, अभी मारता कहाँ done. H1. Now after that, just let me try to मैं तो write मजाक मारती हूँ सबको form. मजा आता है Okay, close it, right? And form हाँ मैं बोली थी action. मैंने Let me go like DIS
and method equal to post. All right. I'm just writing a very simple thing. User नहीं होता name मेरा input type equal to अब आप करो text मैं कुछ नहीं करूँगी name equal to uname. आपके लोगों को As I कुछ told नहीं you, करना please make sure to मेरे code को along with पता है me. इनको सुनाई थी मैंने Input type equal to submit and इनका भी होता है value ये लोग उंगली just पकड़ ले submit submit. That's it, not कैसे more than करते that. हैं Okay, so index.html. देखो कौन सा अच्छा लग रहा Index.html. Is it present here? मैं तो Yes, मैं it is कह रही there. थी Let me है remove जो अच्छा remaining लगेगा all the उसको things. पर मैं ये वाला फ्रेम I'm पहनूंगी just तभी अच्छा keeping लगेगा only अरे आओ है रे ओवर ओवर सोचूं वो वाला index.html. फ्रेम पहनूंगी Okay, ओवर now अरे नीचे से जो let ये आता me just ओ try to ओवर ही बोलता execute. हूँ ओवर Right तो पूरा click, ओवर नजर आ run रहा as, run on server, Tomcat है और 9.0, मैं ना give a इस click बार on देख next. रही हूँ I मुझे don't need anything else, just finish. और मैं नाइट क्लास लगा के देखते मुझे देखो तो अब देखो Our server is starting and yeah, we got our username and submit. Do one thing, just okay. Now here, this is better. This is username. I just want to go with वही अच्छा लगेगा BR and BR. Two break statements so that my support will be coming down. Okay, cool. Now let me go to my Java resources src, just a small package, normal package, com.servlets servlets, just a normal package. Inside that display servlet, let me just try to go to new, select a class, display display servlet display servlet, give a click on finish, and after that here at the rate, oh, I did not add my servlet API in the build path. Let me add my servlet API jar file. Servlet API open, apply and close. Now here web servlet and what is the URL I have given? DIS. After that extends HTTP servlet PROTECTD protected void do post, and here at the rate override just for confirmation do post HTTP servlet request req comma HTTP servlet response res throws servlet exception comma IO exception. Okay. Now after that, coming to here, we'll do one thing. I'm going to get my request dot get servlet context, मुझे पहले उजला पेंट get servlet context equal to context context. We already know this code, guys. We already use this code. I'm just trying to set the attribute on servlet context dot set attribute. I'll ये go क्यों नहीं with अच्छा लगा message one, कहाँ message one, ऐड टू कार्ट and नहीं किया here I'm just going to write पता कैसे चले this समझ आ गया is था मैं कहा from servlet context 6,000 servlet नहीं मुझे देखना context, actually from servlet 6,000 नहीं servlet. देखना ना I'm trying to क्या get this, 6,000 send this वाला message भी from servlet, ना उतना महंगा directly नहीं from servlet. है Okay. And after that, let me सिर्फ just try लेंथ to कट go का है like लेंथ कट वाले request का है dot उतना get request dispatcher. Just going to write display dot JSP dot forward request response. So ना obviously next page what we need to create, ये that क्या है is display कौन dot कैसे पता JSP. कौन बताया New, राहुल ने बताया okay, display, just a second, DISPLA.
display.jsp. Give a click on या तो next and ट्रांसपेरेंट finish. हल्ला करिए देखिए। Okay, this is our servlet कर by the दिए way. आज है आपको कोई बता रही थी बता रहे थे Okay, अच्छा now जब ब्लाइंड से inside हाँ this हाँ JSP, उन्हें तो क्या center tag. Just let me try to go like it's a JSP file. पता है एक चीज Okay, so no जो worries. चश्मा होता है ना H1 वो आईब्रो के ऊपर slash नहीं जाना H1. चाहिए आईब्रो के Let me नीचे just try to पगली use उगली है scriptlet tag. कौन बोल रहा है Okay, ऐसा now नहीं चाहिए here मतलब ज्यादा request ऊपर नहीं चाहिए ये नहीं कि dot आपका आईब्रो दिख रहा है get इससे मतलब या तो ज्यादा चढ़ा parameter. What is the कितना name we are चश्मा giving ऐसा here? रहना चाहिए Username, कि आईब्रो तक uname, रहे आईब्रो के ऊपर ना जाए देखो हम बताते हैं हम uname. कितना पहनते हैं हाँ तो तब आपका आईब्रो Okay, ठीक है this ना is आईब्रो of के type आईब्रो के लाइन पे हो हाँ तो string. वही होना चाहिए हाँ तो ये ऐसे ऐसे थोड़ी String पहनते हैं equal to string चश्मा का शेप बताओ user username equal to like this. Okay, नहीं पसंद पड़ा रहा है एक ही ठीक लग रहा है या तो वाइट ट्रांसपेरेंट लीजिए या तो ग्रे ट्रांसपेरेंट username. Okay. Basically, whatever the data which is present in our वाइट form action, I गीला am हो trying to जाएगा get the data directly into our मैं ग्रे ही JSP. पहनी थी Okay, मैं we already know बिहार that. गई तो ग्रे वाला Now, पहन in display servlet, we are having, गई ग्रे पहन गई ना we already set the हाँ ग्रे attribute पहन on गई थी context. We know how to get that वो attribute. अच्छा चश्मा था टूट गया बेचारा Application dot get नस तोड़ दी attribute. बोलते इसको कुछ बोल। Okay, MSG कौन message one. कौन Just बोलती trying है to write equal to message one of type किसको कुछ पूछा था string. This is also string string. Okay. Now I just want to print. Sure. Out अरे अपनी dot शकल के साथ कैसे दिखाऊं println. इसको मैं होगा रे। Out dot println. Here I just want to go like नहीं यार तभी तो बोल टायन होगा username कायन कौन plus username भाई कैसे and दिखता out dot println अरे नहीं लाना भाई out dot println and I just want to write data servlet 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 context data plus message one. Let me just try to use two break statements. Okay, just here also सूरज के what बाद is two break statements done. Message one. We already know this. Actually, we already know this. Out dot println. Now, if I execute my program for one more time, right click, run as, run on server, next and finish. एक सामान मंगवाना है ब्लिंकिट करो Username Kishan, submit. ब्लिंकिट चलता है ना Yeah, servlet context data. This is from servlet context servlet and servlet context data. Username Kishan. I'm able to get my username. I'm able to get my context data from the servlet also. Right now, what I want to do here is up to now, we already know. कट गया तो We already know. Right now, I want to give the data in the web.xml. Here, web.xml. Servlet देखी context. नहीं है ये This, just a second. Let me here यही मंगवा लेती हूँ in servlet context. I told you we'll be able to give the parameters by using context param tags. कट Na? गया तो This is context क्या parameter. Okay, tag here. Okay, I'm just going to give message 2 and I'll be giving the message as just a second. This is from servlet context web.xml. Let me, okay. This is from servlet context, but this is from web.xml like that. First, write up to here. After that, we'll speak. Index.html is completed now.
Display servlet is also completed? No? Carry on. First write this. नहीं है, लेना ही नहीं है इसको, हटाइए इसको। Good. किसको निकाले? हटा दो क्या? दो ऐड ही ऑप्शन नहीं ही है, देखो ना। दोनों सेम चीज है। अच्छा एक्सेल के समान हुआ? एक पहले से क्या ऐड था? वो कॉपी था एक, तो हटा। कहाँ गया? गेट हाँ, 50 ऑफ। रुको 200 पे तुम्हारा 50 ऑफ है। चॉकलेट मंगवा दीजिए, खा लूंगी। क्या मंगाऊं? चॉकलेट। 23 रुपये और चाहिए। चॉकलेट मंगा दीजिए, 23 नहीं 25। चॉकलेट मंगा दीजिए। क्या है? चोट लग जाती स्कूल में पोडियम से। दौड़ते तो ऐसे, पता है इतना दौड़ती तो मैं अपने घर में भी। कौन वाला? कौन वाला? दूध वाला? लीव। आपको टच स्क्रीन वाला लैपटॉप पसंद है? बाबू सो गया। कौन है? बाहर निकलो, बाहर निकलना। कौन है? बाहर निकलो ना, नया करो, कल से आना। भैया आ गया, रखो यार। आ गया कुछ आइए नहीं है कुछ पूरा था। Vec.xml is also there. कल से Tell me, is display servlet completed? No? Guys, you need to respond. Is display servlet completed? Okay. Then this is display.jsp and this is web.xml. Please have this. आपको थायराइड नहीं है? पगली है। मुझे है। कैसे? मजाक नहीं करते। कैसे पता चलता है? एक टेस्ट हुआ, थायराइड है मुझे। TSH का सिचुएशन बताई तो हार्मोनल डिस्बैलेंस है मुझे पूरा। Sanika, display servlet not completed, Amma. Go ahead. उनको तो जानते हैं। लड़का लड़का आप ही भेजते हैं ना? लड़का भी भेजते हैं। ठीक है, आप ही को कंफर्म करना है, कल पैसा कॉल करने जाइए। महीना वही मिल जाएगा, पैसा एक जगह नहीं है। हमको डेली आदमी आना चाहिए। आप आने Online students, if completed, kindly please message me in the chat. Up to here, if it is completed, make sure to message me in the chat.
Okay. I hope it's done. Now, okay, guys, just a minute. Just a minute. Please listen. Please listen. Please listen. Generally, up to now, what we did in the servlet, eyes on the board. Up to now, what we did. In the servlet, we are able to get our servlet context object, and on the context object, we are setting the attributes, and we will be able to get that attribute in our JSP. We already know that. Now, for the first time, we are actually setting the attributes in the web.xml. पहले सामान मंगवाई Okay. Now consider this message to as key. Consider this message to parameter name as key, parameter value literally as value. All right. Now, if I want to get this attribute in the JSP, generally we'll be using application.getAttribute. Right now, I want to get this in the JSP. Then application.getInit parameter. And what is the parameter name? What is the parameter name? Message to. Message to. Online students. Message to. And of course, what is its type? String message to. I just want to. Okay, let me just try to typecast. And here, this is also servlet context data only, but this data is from web.xml. Let me just try to execute. Right click, run as run on server. ऐसे लगता रहता है Let's see. And, okay. Just going to give my name and submit. Username is Kishan, and I'm able to get the data from servlet, and of course I'm able to get the data from web.xml. Whenever I'm trying to get the data from the servlet, obviously we need to use get attribute. Get attribute. Application.getAttribute. If I want to get the data from web.xml, get init parameter. Am I clear with this? Online students, if possible, I want you to kindly please respond to the chat for me. Please respond to the chat for me, guys. Online students, go ahead. Actually, I told you, servlet context object will be having information related to the server. Na? Now here, let me just try to go like SCR server name. Just write, let me try to write application dot get server info. Application dot get server info. And let me just try to. नहीं सोऊंगी नहीं ऐसे रहना ही नहीं है, ये This is the server बीमार which का I'm using. लक्षण है। So like that. Servlet context object will be having information related to your server. Now let us speak about servlet config object. First things first, when you're speaking about servlet config object, we already wrote this here. Let me just try to. Please have this in your notes now. Servlet name display DISPLAY. Display DCRVLET. Is it display servlet? Let me just try to copy paste exactly the same name. अपना खाओगी, हम तो मुंह ताकेंगे। आपसे मैंने मांगे आप दिए थे मुझे नहीं दिए अच्छा तो ठीक है। Servlet class, please give the entire package name. Com dot fully qualified name. Com dot pack1 dot display servlet. Parameter name, I'm just going to write message 3 value
कब मैंने आया इस पर लूटो कब नहीं आ सका हुआ is from ठीक है ना रे servlet config ये धोवाएगा तो ये हो जाएगा। कौन हो जाएगा नहीं हो जाएगा is from servlet config, and of course we are trying to get it from web.xml. Okay, and servlet name display servlet URL TIS. First write like this. After that we'll speak. Good. अब तू अगर सब गलबात कुछ ही कर रहा है तो तोरा कुछ ही काम दियो सर ने कोई काम सोच लिए ना कोई काम है रे कुछ पढ़ना है ये बोलो ना एलन का एप्लीकेशन नंबर निकालो तो वो निकाल रहे हैं। हाँ उसका निकालो ना एप्लीकेशन नंबर आप फोन करो एलन को ठीक है मेरा नंबर से फोन करो बोलो कि आप किसी का नंबर उसी का नंबर से फोन करो जाओ आपने बताया हम क्या बात करें हाँ उसी को बोलो कि मेरे को डिस्काउंट लगे तुम बतिया लो ना जाके नहीं मिलता ना बात पता है ना पूरा मुझे। बोलने कर रहे हैं कुछ नहीं मिलता तो जितना डिस्काउंट मिलेगा ना सब पैसा रख लेंगे हम ले जाके हमने तुम्हारे पास एक सेकंड स्कॉलरशिप पे इस तुम्हारा बार 5% डिस्काउंट मिल रहा है ना हैं तो 5% वो मिल ही नहीं रहा है पुराना स्कॉलरशिप डिस्काउंट। अच्छा 100% तो कोर्स का तुम्हें मिल रहा है 1,72,000 रुपये तुम दे दो ठीक है बाकी जितना हम लोग करा लें हम जाके मेरा से यही सब ठीक है अब ब्रश नहीं किए थे तो क्या करूँगी Online students, if writing completed, kindly please do message. कर ले तू को और उसको भी रखे वो बांधने में काम आए। वो सब इम्पोर्टेंट नहीं वो खारखोर ज्यादा करता है ना वो प्लास्टिक ज्यादा खारखोर करता है अरे ये वाला बोल रहा है मैं बांधने की जरूरत नहीं है मैं पहनने ही जिंदगी में ना कुर्ता के ऊपर ऐसे लेके चल जाएगा ना रे निकाले रे निकाल दो। अरे ला। निकाल दी मदनी वाला ना सबसे बड़ा मुझे दिया ना ये लीजिए वो तो है ही है 5% लीजिए वैलिड टिल 15 मार्च 2026 हाँ तो तुम वो सबसे ना लास्ट वाला कौन है यही है सबसे लेटेस्ट वाला 5% मिला था बना के नहीं आई थी कौन नंबर पर चल किसी हाँ ब्रांड तो कितना कम बनाएगा हाँ, ना 5% डिस्काउंट दिया तुम अभी वो टेस्ट सीरीज दो जितना तो भी बना के आते तो 10% इसको ना ऑनलाइन वाला दिलवाते हैं ऑनलाइन वाला ऑनलाइन बोला हाँ दिलवा दो उसको सेटिंग इसको नहीं वो पकड़ लेता है बताइए तो स्पीड बता दिया थोड़ा सा ज्यादा तेज बैठा दिया ठीक है Right now, we are trying to set the parameters बोल रहा है कि directly 1,72,000 from दे दो, the बाकी हम बैठते हैं। web.xml. Online students, if completed, kindly please try to message me in the chat. Sai sir, it's com. Oh, yeah. What is your package name, guys? Com.servlets, na? बता दूंगी So बाद में sorry, my mistake. Yeah, Sai, thank you. It's a good eye. Com.servlets. Yes. Com.servlets. Thank you, Sai. हुआ के लिए। हुआ के वही लिए। Please. साइड वाला क्या बोलेगा? तुम किसका है? मेरा पहना हुआ नहीं वो ये है धोया हुआ। ऐसा कपड़ा टांग लो रे। नया है मैं धोया हुआ Done? किसी का एक कपड़ा से ज्यादा नहीं Boys, लेना। last. Done? देखिए, Writing? 1 minute? किसी का Please. 1 minute, guys. 1 minute. उसके नीचे ब्राउन वाला जो है वो मेरा है वो भी आधा वो भी आधा है पहले कॉल करेंगे पहले टेस्ट दे बिल्लू क्या कर रहा है? आपका ये कहाँ से हमने इसका मेरा ब्लू टी-शर्ट शर्ट कैसे टांग लो? आपका भी यहाँ पे एक शर्ट है टी शर्ट है धो देंगे भूरा वाला ये नया 4 दिन पहन के चल गए मशीन चलाइएगा अभी डालो उसमें पहले टेस्ट दे जाके पहले कॉल किया जाए पहले कॉल करो
वो पकड़ता नहीं, तुम कॉल करो। और फिर All ऊपर में right. आना तो फिर अपन नंबर I hope it's done. Now, let us just try to go to the क्या servlet. बोलते हैं, कॉल Now, करो उसको, बोलो कि this जो is भाई बोल our रहा हूँ, servlet. I told you if we है तो मेरा want to नंबर इसके get पास। our, ये I mean, बैच है, get ये our वाला बैच, servlet config object, मम्मा का नंबर दो। servlet config object, we need to call this method. What is the method name? Disa. दिमाग अलग रहता है। Get servlet config. Basically, that is the method. क्या Means here, let me just try to. Okay. Okay. Now, this dot get servlet नहीं हुआ है, config. बैग निकालो। No, listen. Just a minute. Get servlet config. In the place of this, can I use super? Absolutely yes. Why? Because get servlet config method. ठीक है, पूरा Hang on. BCC का BCC बाबू निकाल लिया, बहुत पैसा बचा। Just a sec. Let me get सुन back. रहा है? BCC पूरा Get खत्म करना है। servlet config. आकांक्षा, This is basically generic servlet, Nana. ये जो खोली है, Can you see that? जागृत बैठो, Generic फटाफट। servlet. It's a class. Which class? Abstract class. Abstract class. Now, generic servlet class. Inside this generic servlet class, can you see get servlet config? आराम घर पे जाके कर सकते हैं। Can you see this method? Respond, right? Get servlet config. So basically, this method is present inside generic servlet. As generic servlet is the parent class for HTTP servlet. Are you understanding me? Speak, Ram. No? Yes? Yes? As generic servlet is the parent class for HTTP servlet, in the child class, that is HTTP servlet, in the child class, we will be directly able to call parent class methods by using either super keyword or this keyword. Anything is okay. We can do that in the child class. That's exactly what I'm trying to do. And what is its return type? Config, config config. Here I'm just trying to, not context, config, config config. What is this? Servlet, servlet servlet config. Now, what I told you, servlet config object is unique for every servlet I told you now. Then I'll do one thing. Let me just try to use here request dot set attribute servlet servlet name, and here I'm just trying to use config config dot get servlet name. Now I'm setting this attribute on request. Yes or no, Ra? लैंडमार्क Please stop coding for me. लैंडमार्क Just a second, please. I'm actually setting the attribute on request. Can I get this attribute in our JSP? Yes. Now, yes, sir. Ra, please tell me. Now, inside this JSP, directly here, I'm going to write request इसको डस्टबिन में dot get attribute. What is the attribute name here? Servlet name. Okay, servlet name equal to string. Okay, I'm just trying to servlet servlet name string. Servlet name, and here also I'm just going to write string. Now here, see directly I'm going to write here out.println servlet name, and just I'm going to write servlet name. And if I'm trying to execute, let me just try to, is it going to work? No, sorry. Here I just want to say one more small thing. Guys, please listen. Online students,
Online students, please make sure to listen to this, otherwise your project will not work. Listen. In our web.xml, if you observe line number 20, we are already setting the URL pattern. Yes or no? Yes or no? Previously, we are directly giving this URL pattern in our display servlet. One servlet cannot have multiple URL patterns. If here display servlet is having one URL, and for the same display servlet, we are having one more URL pattern. If you are having like this, your server will not start. क्या खाए? Let me क्या check. खाए कल? मोमो मोमो खाने से और गुपचुप खाने से? कहाँ पता कुछ तो खाने से हुआ है। पेट में Can you see this? Your server will not start. Yes. Why my server failed to start? Why? Because there are two servlets. I mean, there are two URLs mapped to the same servlet. No, it cannot do that. So, what you need to do, please make sure to keep your annotation in comment. Let us just try to keep this annotation in comment. Am I clear with this? Please respond. Right now, in our web.xml, directly we are having only one URL. Fine. Let's try to execute one more time. Right click, run as run on server, give a click on next and finish. And टेबल चाहिए. let's see, our server is table getting है? started. Yep, username. I'm just going to submit. And am I able to get my servlet name? Of course, I'm able to get that. And of course, yeah, I'll be able to get this URL, I mean, this parameter name message3 also by using a method. What is that method? Just a second. You have just written that. What is that method, guys? Get init parameter. Get init parameter. Okay, we'll do one thing. Here, let me just try to get to my display servlet. Okay. Now here request dot set attribute. I'm just trying to go like message 4. Message 3 is already taken. Huh? Message 2 is taken. Message 3. Yeah, message 3. So here also I need to go with like message 3. I can go with any name. Just for my understanding, I'm giving you message 3. And here, what is the method? Config dot get init parameter name, sir. Get init parameter. And what is the name I have given here? Message 3. Same. Where? Message 3. Yes. Now, actually, I'm setting them on my request object. Now here, display.jsp. Let me just try to, okay. And here, what is the name? Message 3, na? Message 3. I just want to make this as message 3. And after that, this is which data, guys? Servlet config data. I just want to display here servlet config, and I just want to go with message 3. Now let's see, am I able to get the data here? Right click, run as run on server. Do I click on next and finish? Restart the server. Okay. Username Kishan, submit. This is from servlet config, and I am trying to get the data directly from web.xml. Sir, I have a doubt. What is the difference between setting the values in the servlet and setting the values in the web.xml? What is the difference here? You tell me one thing, Nana.
Whenever we are setting the values, I repeat, whenever we are setting the values, I mean setting the attributes in the servlet, first that servlet should be triggered. Na? First that servlet should be loaded. First that servlet should be executed. और Then कोई only you will मतलब be able count to set वगैरह the ऐसा नहीं attribute, होता you will है? be able to get the attribute. But whenever you are setting मतलब the values in the लेने के लिए web.xml, और at the time of कोई initialization only, the values will be assigned कोई and you will स्कॉलरशिप be able to use वगैरह them. बिना As simple as टेस्ट this. दिए वगैरह? Am I और clear with that? एनसीईआरटी Yes. सर्टिफिकेट Come on, kindly please try to have this. So index.html is already done. Web.xml is also already done. Na? We already wrote web.xml. गवर्नमेंट जॉब है So display servlet and display.jsp. Come on, go ahead, please. डिफेंस में रहना चाहिए था ना। Please have it. तब रेलवे में क्यों भागा हुआ है? Shravan, डिफेंस में I जाना चाहिए। believe you understand this. और मतलब अभी तो सबको एनडीए कोटा में मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूँ Yeah. तो कोटा Come में on, कौन go सा ahead, एलियन बेस please. रहेगा? नीट मैंने चेक किया था 15 मई को कोई बैच स्टार्ट हो रहा है, लैंडमार्क सिटी में कोई सेंटर है। हाँ 11 के लिए नहीं, हाँ मेडिकल में एलियन की वेबसाइट से चेक किया था। कुनाड़ी में 19 और ये जो 1 जून को जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो किस सेंटर पे? हाँ और भी मैं अगर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देना चाहता हूँ तो उसका कोई नहीं। जो मोहन उसने फॉर्म का साइन करवाया था मोहन सिंह को। 19 मई को क्या 19 में स्टार्ट बैच। हाँ तो आगे पीछे तुम जो देखी हो गुजरात का 15 मई। गुजरात कहाँ का है? कहाँ रहती थी? गुजरात बोल रहे मुझे नमन भेजा, मैंने नहीं देखी थी। अपना भी 1,46,000। हमेशा जब इंक्वायरी करो ना तो सिर्फ क्वेश्चन पूछो, ये मत बोलो कि 15 तारीख से तो बैच स्टार्ट हो रहा है, तुमको पूछे बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, बस वो भी पूरा हिंदी में बात कर स्टेट तमिलनाडु 20 20 21। इंडियन आर्मी के लिए है 10%, 10-15 कुछ इंडियन आर्मी 10% और एक और बोला था 15% कुछ। यही है टिकटॉक मिला महेंद्र सिंह साइड देखो एक दो रे Make sure to check. नहीं
check the output also. 30 कम है लेकिन यहाँ का 146 बोला 46 यानी 25 और एक साथ जमा करेंगे तो 7,000 का डिस्काउंट और डिस्काउंट मतलब स्कॉलरशिप रहेगा 10-15% का। देखिए कोटा राजस्थान का ही भेजा था मैंने। गलत है तो कुनाड़ी कहाँ है? वही लैंडमार्क सिटी। लैंडमार्क सिटी में एक कुनारी बिल्डिंग है, एक सकार बिल्डिंग। कहाँ है? 15/5 इसकी लिंक टेस्ट है नरेंद्र मोदी। अरे वही स्क्रीनिंग टेस्ट ही वही। नहीं इसकी रीनिंग टेस्ट मतलब ये ना हुआ, क्या बोलते हैं उसको? जो तुम एग्जाम देती है नहीं तो ओरिएंटेशन। हाँ इसको टेस्ट होता है। इसकी रीनिंग टेस्ट मतलब वही, मतलब बच्चा को बुलाया बैठाया क्या क्या है। मेरा भी हुआ था, पता है इसे तुम्हारा हाथ कट जाएगा ऐसे करती। कब बोला? 15 19 19 कि 29? 15 मई 19 मई और 1 जून। अरे आज स्टार्ट हुआ, आज है वाला वो करा जा कर लेगा। Online students, if completed, kindly please message me in the chat. हो गया, अब सोचते रहेगी। कोई बात नहीं। फीस तो ठीक है, टेस्ट दो और क्या कर सकते हैं। देखें हम फोन देना। कहाँ से देखती है? एलन से। क्या मैं PW अच्छा जो ये देती हो टेस्ट पैसा लगता है उसमें 99 हर बार? तो 3 बार Right. देती Is हो। it done? Dot. That's it, guys. That's it for today. So please make sure to complete this code, and if you wanna take